JKPSC medical preparation, the aspirants who are preparing for the JKPSC examinations. So we get a lot of queries of how the questions are asked and what should we prepare. So for the students who have just troubled us a bit, so for them we will be just going through a set of questions. I will not be going through the answers, how to arrive at the answer, but just let you understand what are the types of questions which are asked in the JKPSC examinations, especially the types of questions which have been previously asked, and naturally what will be expected. Nobody knows it, but there is something, an indication sometimes what happens to be the pattern of the examinations, and that helps a lot. Sometimes you do not expect many questions to be repeated, so be aware of that thing of reading the PYQs only. You should be also well versed with the knowledge ahead. So as far as the JKPSC is concerned, this JKPSC Medical Officer Quick Review book, that's already there. I need not to mention much about that. And in here, I will be discussing something from the main topics like the medicine, like surgery, gynae ops, pediatrics, anatomy, statistics, pharmacology, SPM, forensic medicine, and pediatrics. So you can see over here, these are the subjects from where the major chunk of the questions have been asked and are asked. So medicine. Now, see the question in medicine. Say an example of a 63-year-old smoker has an episode of hemoptysis. He is diagnosed with lung cancer. He has got SAIDH and peripheral neuropathy on endocrinological evaluation. Most likely causes. Now, इसमें मैं ऐसे कहने का चाहता हूँ कि that what is that this question tells you? This question tells you that there are four choices mentioned: adenocarcinoma, SCC, metastasis, small cell carcinoma. तो इसमें ऐसी चीज है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैंसर जो है उनके प्रेजेंटेशन फीचर्स, कहीं पे क्या पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं और उनके मेन पैथोलॉजिकल जेनेटिकल कोरिलेशंस क्या होते हैं, which is associated with smoking, which is not associated with smoking, which is the most common type of lung cancer in India, which is the most common type of lung cancer in the whole of the world. Then where is clubbing associated, which occurs usually at a scar site. So ye cheezein we have seen that they have been asked previously as well. And once they have been asked previously as well, one time a question will be asked on one clinical aspect of it, and another time a question will be asked on the another clinical aspect of it. So what is nutshell? आपने ये lung cancers are very important like any other condition like tuberculosis. तो इसके बारे में आपको पूरा, you have to study this important topic in totality. Now, it is not that the same question will be repeated in the next exam in a similar manner. No, it never happens usually like that. And a good examiner will never place the same question next time. What is the fun? So then what would have happened that the previous year's questions, anybody who reads, the same person, say, the person who studies the same stuff will get, say, top merit. It does not happen like that. So don't expect much of a repetition. Concept is very important. ये concept का होना बहुत important है. Now, I move to second question. So you can see over here, this is a question from neurology, tapes dorsalis. And in the tapes dorsalis, what part of the spinal cord is affected? So the examiner has given multiple regions of the spinal cord: posterior column, central column, anterior column, lateral column. And you know, is the posterior columns, the fasciculus gracilis, the fasciculus cuneatus, which are getting degenerated as a result of this vitamin B12 deficiency, long-standing tapes dorsalis, neurosyphilis, and all those things. So I will not go into much detail. लेकिन कहने का मतलब ये है कि the concept, the basic concept involved is there. Question number 3. Again, a patient comes to a primary health center. So whatsoever features he has, there's a range of questions which are given over here, the range of options which are given over here, and you have to make a diagnosis. So question number 3 is there. So clinical scenario, इस patient में cataracts थे, USG ने testicular atrophy determine कर ली. So something like myotonia dystrophica. You have to remember how myotonia dystrophica is different from myasthenia gravis. The patient may be presenting with ptosis in many features, but ptosis along with certain other features, how it is myotonic dystrophy. So that's important. So this is the way you study medicine. Then
from the cardiac conditions, how to differentiate between various important emergencies, cardiac tamponade, fat embolism, hemothorax, tension pneumothorax. क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लिनिकल स्नैरियो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्लिनिकल स्नैरियो दिया है और ये क्लिनिकल स्नैरियो आपको रीड करना पड़ेगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा वैल्यूज क्या है, what is the physical examination showing, what is the pulse, what is the respiratory rate, what is the blood pressure, respiratory rate, all those things. So this is how. Now question number 5. Again, a person comes to a patient comes to a primary health center. He has been diagnosed with something. Say now here pathology. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्लिनिकल केसेस बताए जाएंगे, तो आपको कहीं कहीं पे ये बताया जाएगा कि ये क्लिनिकल केस है और इसमें कहाँ पे लीजन है, वेदर द लीजन इज द cerebrum, anterior cerebral artery territory, posterior cerebral artery territory, the frontal lobe, the occipital lobe, the any part, the cerebellar vermis, any part. So it is however a frontotemporal dementia over here. It's Pick's disease. So nothing. I mean to say, only the basic concepts are there. So these are the types of questions you expect from जो आपके मेडिसिन के क्वेश्चंस है। तो आप कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी के बेसिक्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी के बेसिक्स अच्छे से पढ़े एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ मूविंग टू surgery. अब सर्जरी इज ऑल्सो ए मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम सर्जरी। तो उधर आपको ये मैलिग्नेंसीज पढ़नी पड़ेगी, हेपेटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, एडनोकार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर, रेक्टल मैलिग्नेंसीज, कोलोनिक मैलिग्नेंसीज, कोलोनिक पॉलीपोसिस सिंड्रोम्स। और यहाँ पे इधर एक क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग pancreatic cancer. I think it is mostly, I'm not studying it thoroughly, but migratory thrombophlebites. So your migratory thrombophlebites, as you are well aware, that it is one of the important features of pancreatic cancer. So what are the associations of glycogonoma, somatostatinoma, pheochromocytomas, all these things, the MEN1, MEN2, all these syndromes, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। Then, then over here, a pancreatitis patient presenting with a swelling and all those things, the values are given these. So you have to know things like pancreatic pseudocyst or बाकी चीजें जो हैं. So these are very important. I mean to say cysts, the benign cysts, the potential of the cyst to turn malignance, and all those things in case of the breast as well. Now, question number 3. You are given a clinical scenario, and from this you have to know the likely association. RCC के साथ कौन-कौन से paraneoplastic syndromes associate हो सकते हैं, and there is one this disease, von Hippel-Lindau disease, and cerebellar hemangioblastomas happen to be very very important, and that's what the question says. So I will not go again into the crux of the question that you can see. आप तो वो खुद देख सकते हैं, but it needs a level of standard of academics for you to answer questions of these sorts. Now, anything starting from hepatitis A, B, C, D, esophagitis, you have to know the Zollinger-Ellison syndrome, the pheochromocytoma, esophagitis. I would say बहुत सारे क्वेश्चन जो malignancies पे बताए जाते हैं, because in the primary health centers you find people coming and you can pick up something on the ultrasound, any malignancy. Question number 5. तो ऐसे ही जैसे हम आपको कहते हैं, I told you that esophageal malignancies, Barrett's esophagus, so many things, I mean to say precancerous conditions, carcinoma in situ. So questions like Bowen's disease, leukoplakia, malakoplakia, I mean to say Barrett's esophagus as is present over here. And so many questions are asked on the basis of the benign lesions or whether they are malignant lesions. The histopathology, whether it's an adenocarcinoma, whether it's a squamous cell carcinoma. Even in case of orthopedics, whether it's an epiphyseal tumor, is a diaphyseal tumor, is a metaphyseal tumor. So ये चीजें you have to know all these things. So after surgery, gynecology, obstetrics, and pediatrics. So इसमें पहले what is there in pediatrics? So many questions as far as the question number 1 in gynae obs pediatrics is concerned. You can see that coarctation of aorta, इसको किस लीजन के साथ ज़्यादातर एसोसिएशन है? Bicuspid aortic valve disease, you have to remember. So associations. Question number 2, Cash-22 syndrome. और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि Downs, Edwards, Treacher-Collins syndrome, Patu syndrome, DiGeorgi syndrome as the other name for Cash-22. इसके क्या-क्या features होते हैं? So moving to question number 3. Norwood operation, बहुत सारी सर्जरीज का नाम, उनका वो किधर करते हैं? Port shunt, what are the various types of portosystemic shunts we use? Names after certain scientists. So things like those, major surgeries, what we do.
उनका नाम किसके पीछे, कौन सी सर्जरी किधर करते हैं, थिंग्स लाइक दोज. नाउ अगेन uh, uh, you see a clinical scenario, एक pediatric patient में question number 4, you can see that coarctation of aorta. इसमें answer is coarctation of aorta. How do you come to arise at the diagnosis of coarctation of aorta? Because we can be having upper limit, upper extremity strong pulse, lower extremity feeble pulses because of the coarctation at a particular level. So this is important. So this is not hi-fi that much. Now, developmental milestone, child का development कैसे होता है, which are the factors which prevent the growth of a child, intrauterine growth retardation, question number 5. जो आप देख सकते हैं, देन व्हाट आर द टेरोटोजन्स, किस टेरोटोजन का क्या इफेक्ट है, लिथियम, I mean to say the drugs, the hormones, the antimitotic drugs, warfarin, alcohol, smoking, इनका क्या इफेक्ट है fetus पे. So many fetal hydantoin syndrome, fetal warfarin syndrome, isn't it? So teratogenics आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. These factors are very very important. Then gynecology, I would say question. तो about the sexually transmitted disease, कौन सी sexually transmitted disease, क्या drug किसमें देते हैं, so things like those, ये आपको again I mean to say. Then endometriosis, common sites, cervical cancers, uterine malignancies, क्या क्या चीजें है, common site of adenomyosis, common site of endometriosis, so these things. After that, anatomy questions. तो anatomy is asked from a clinical viewpoint, और इसमें say for example this question number 1, वो shows lymph nodes, ये कौन से lymph nodes होते हैं, किस कैटेगरी के lymph nodes होते हैं, cloacax lymph nodes किधर होते हैं, तो बाकी lymph nodes, which are the territories of the testicular sac, parotid lymph nodes किधर enlarge होते हैं, sister Mary Joseph nodule किधर होता है, so many things on the lymphadenopathy. Now question number 2, अब ये पेशेंट को गैस्ट्रिक पेन थी. नाउ द पेन इज फेल्ट इन द स्टोमक, व्हाट इज द रेफर्ड पेन, कौन सी सेगमेंट्स, बेसिक फंडामेंटल एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट्स जो हमको हेल्प करेंगे इन सर्जरी एंड डायग्नोसिस. सो क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्नरी एंजियोग्राफी करें तो इट विल बी सीन कि कौन सी राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है, कौन सी लेफ्ट की ब्रांच है. सो थिंग्स लाइक दो. सो इट्स अ क्लिनिकली अप्लाइड क्वेश्चन. बेसिकली क्या आपको पता होना चाहिए, द ब्रांच ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी, द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग किसकी ब्रांच है, सर्कमफ्लेक्स किसकी ब्रांच है, राइट मार्जिनल किसकी ब्रांच है. दैट्स इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 4, अभी इम्पोर्टेंट टेस्ट है ट्रेडनबर्ग का. What does it test? Incompetency of what? Valves, heart, bile ducts, nasolacrimal duct. So many things, Trelleborg's test, and there are two Trelleborg's tests. So over here, it is one of the tests which tests the incompetency of the valves. Now, SPM and statistics combined. SPM एक बहुत important subject है, along with बहुत सारे questions statistics में से भी आ सकते हैं. Now we have to know about these diseases. Byssinosis, question number 1 of SPM. So byssinosis क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है. Now there is something which is called as coal workers pneumoconiosis. Then there is something which is asbestosis. There is something silicosis. There is something which is associated with, I mean to say, grains and all those things. Now question number 2. So, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फ्ली, माइट, टिक, मॉस्किटो कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, सैंड फ्लाई से कौन सी डिजीज हो सकती है, एडी से कौन सी डिजीज हो सकती है, सो मेनी लाइस से कौन सी डिजीज हो सकती है, द वैक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ये चीज़ें आपको याद रखें. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टैटिस्टिक में से आपके पास डाटा है, ये डाटा हम कैटेगराइज करते हैं सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड. तो ये कौन सा डाटा हुआ, ये नॉमिनल हुआ, इंटरवल हुआ, ऑर्डिनल हुआ, रेशियो हुआ. सो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. थिंग्स लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ जो हमारी डिजीज हैं, चाहे कोई भी है, कॉलरा है, प्लेग है, लेप्टोस्पोरियोसिस है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनका कीमो प्रोफाइलेक्सिस कैसे करेंगे, कौन सी दवाइयाँ आर द बेस्ट, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, एटीटीज, एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स, एंटीमाइटोटिक ड्रग्स, द ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में. क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए, रैट इज इन्वॉल्व इन, मतलब what diseases can be transmitted to rats, what through rabbits, what through pigeons, what through dogs, what through cats, what through poultry. So we had so many brucellosis, I mean to say, a disease, plague is there, cholera is there, measles there, mumps is there, rubella is there, rubeola is there, so many diseases. किसका क्या involvement है as far as the various organisms are concerned.
फार्माकोलॉजी हम मेडिसिन के साथ ही कवर करते हैं, तो ड्रग्स के बारे में भी पूछा जाता है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, विच आर द हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, विच आर द कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स, विच आर द नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, विच आर द सेरेबेलोटॉक्सिक ड्रग्स, सो थिंग्स लाइक दोज। ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 एज इज ओवर हियर इन फार्माकोलॉजी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मतलब ये ड्रग्स आपको याद रखने पड़ेंगे, विच आर पोटेंशियली कार्डियोटॉक्सिक, विच आर पोटेंशियली नेफ्रोटॉक्सिक एज आई मेंशन, सो थिंग्स लाइक दोज। तो कौन से ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट्स है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, पीडियाट्रिशियंस की ड्रग्स देते हैं लेकिन ऑर्थोपैथी होती है, एंड फ्लोरोक्विनोन्स आर देयर, यू नो, द सिप्रोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन ग्रुप ऑफ द पैफ्लॉक्सिन, स्पारफ्लॉक्सिन, व्हाट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दे कम इन, और इनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साइड इफेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स जो है, बाकी बाकी डायूरेटिक्स, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हो, बहुत सारे ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड स्पेशली रिमेंबर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब लिथियम हमने लिया, लिथियम से कौन-कौन से क्रॉनिक टर्म में हो सकते हैं, दो इज़ अ एंटीसाइकोटिक ड्रग, सो वी आस्क ड्रग्स फ्रॉम मल्टीपल कैटेगरीज, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीसाइकोटिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, सो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप याद रखिए। फॉरेंसिक मेडिसिन, you cannot neglect forensic medicine, sometimes we take it casually, लेकिन forensic medicine में से बहुत सारे questions आते हैं because they are of relevance in the this examination। तो आपको ये फील्ड में जो डॉक्टर होते हैं उनको पता होना चाहिए कि पॉइजनिंग है, किस पॉइजनिंग को कैसे हम डायग्नोज करें, आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, पॉइजनिंग बाय एनी सॉर्ट, कैन फूड, टिन्ड फूड, उसमें कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है, मेटेलिक पॉइजनिंग, आई मीन से देन पॉइजनिंग ड्यू टू सर्टन स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग, एंड ऑल दोस थिंग्स। ये चीज़ें आपको, एंटीडोट्स, कौन सा एंटीडोट किसके लिए, फोमेप्राजोल किसके लिए यूज कर सकते हैं, व्हाट थिंग्स लाइक दोस। नाउ, और सिग्निफिकेंट फॉरेंसिक में कौन से फीचर्स होते हैं, किस पॉइजनिंग में क्या फीचर्स, दूसरे आर्सेनिक पॉइजनिंग में जैसे कि क्या फीचर्स है, मीज लाइंस इज सीन इन पॉइजनिंग ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, सो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन लेड, मर्करी, आर्सेनिक, कॉपर और एनी अदर मेटेलिक पॉइजनिंग, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ, वुंड्स, इंजरीज, स्प्लिट लैसरेशंस का क्वेश्चन आपके सामने है। सो कौन सा टाइप ऑफ, क्या कंट्यूजन होता है, क्या ब्रूज होता है, क्या लैसरेशन होता है, क्या टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, बॉन्ड फ्रैक्चर किसको कहते हैं, बाकी बाकी से ब्लैक आई क्या कहते हैं, यूनिलैटरल ब्लैक आई किसको कहते हैं, बायलैटरल ब्लैक आई क्या किसको कहते हैं, सेस ऑफ राइनोरिया किसको कहते हैं, सेस ऑफ ओटोरिया किसको कहते हैं, दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। डाई एटम्स, अब ड्राउनिंग हो गई, अब डाई एटम्स किसको कहते हैं, व्हाट आर दे, ये चीजें फंडामेंटली यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, एल्गे है, फंगई है, वायरस है, क्या चीज है, सो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नाउ, किस पॉइजनिंग, अगेन पॉइजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल पॉइजनिंग में क्या होता है, दतुरा पॉइजनिंग में क्या हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या हो सकता है, पोन्टाइन स्ट्रोक में क्या हो सकता है, कैसे ये चीज आप आपस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फिट करेंगे, कौन सा लाइकली, मोस्ट लाइकली, टाइम कम है तो कौन सा लाइकली पॉइजनिंग है, सो थिंग्स लाइक दोज यू हैव टू बी एक्वाइंटेड। सेक्शंस, कौन कौन सेक्शन किस पे अप्लाई होता है, द नेम्स ऑफ द सेक्शन, नंबर ऑफ द सेक्शन। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में मेडिसिन का कॉन्सेप्ट्स, बेसिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट्स लाइक द एक्शन पोटेंशियल किसमें क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन किसमें होती है, रिपोलराइजेशन किस वजह से होती है, क्या चीज होती है, थिंग्स लाइक दोज। Now then, calcitrol is released into circulation from कौन सा organ क्या secrete करता है, what are the various important things secrete from the liver, bone, kidney, skin। तो ये चीजें फिजियोलॉजिकल सबस्टेंस का सोर्स आपको बताना पड़ेगा। सिक्रेटिन, अब तीसरी चीज है कि सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय, ये क्वेश्चन आपके, वेदर इट इज टू बी स्पेसिफिक, लार्ज गट है, स्मॉल गट है, पैनक्रियाज है, स्टोमक है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, कौन सा चीज है, सो वो चीज है। उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन, से फॉर एग्जांपल, एरिथ्रोपोइटिन के फंक्शंस क्या है, क्या चीज़ ये करता है, क्या चीज़ नहीं करता है। हम एरिथ्रोपोइटिन को एक फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद वी यूज एरिथ्रोपोइटिन, आई मीन से इन मेडिकल थेरेपी, क्या साइड इफेक्ट्स है, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। तो ये सारी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एंड देन इसके बाद जब आपने ये चीज़ें पढ़ी, हमने थोड़ी चीज़ों को स्किप भी किया होगा, बट इस वीडियो की वजह से, फ्रॉम दिस वीडियो यू गेट एन इंसाइट ऑफ व्हाट इज द लाइकली थिंग विच इज आस्क्ड ऑन द एग्जामिनर्स माइंड। सो ये वीडियो जो है, तो आई थिंक दैट दिस विल बेनिफिट यू टू सम एक्सटेंट। आपके पास टाइम बहुत कम है, यू हैव गॉट ए लेस ऑफ अ टाइम टू स्टडी नाउ, सो फ्यू डेज लेफ्ट, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ